न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लिया। बातें करना बंद कर दो, ये साइलेंट हो जाओ सभी। यस, टीवी नहीं चल रहा है? टीवी देखो भाई, क्या बाकी बातें नहीं करनी है। मेरे साथ एक बहुत वर्स्ट थिंग हुई है अभी कुछ ही देर पहले, और वो सारा गुस्सा निकल सकता है फिर आप लोगों पे, तो इसलिए बी साइलेंट, है ना? हुआ कुछ नहीं है। मेरे को नींद आ गई थी, आज मेरा क्लास नहीं था पहले, मैं घर गया, खाना खाया, और ऐसे चल रहा था, ऐसे कोल्ड कोल्ड हो रखा था, मैंने रजाई ओढ़ के सोया, और मेरी नींद खुली 4:50 पे। तो मेरे को बहुत बड़ा शौक लगा, क्योंकि मैं सोता नहीं हूँ कभी, यूजुअली मैं 6 साल में आज पहली बार सोया हूँ, तो इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, और मेरी हालत भी थोड़ी ऐसी है सोने वाली। तो इसीलिए आप लोग बिल्कुल क्या रहेंगे, साइलेंट। ये न्यूरोग्लिया मुझे लाना है अंदर से, सोया हुआ ब्रेन को जगाना है, तब न्यूरोग्लिया आएगा। तो आप लोगों को बिल्कुल क्या रहना है, साइलेंट। सो दिस न्यूरॉन इज बी ऑलरेडी कंप्लीटेड, पहले कंप्लीट कर दिया। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट दिस न्यूरोग्लिया। Neuron is the primary cell or the functional and structural or functional unit of the nervous system. This nervous system, like जैसे किंग होता है, this is the king, किंग को बनाने वाला ये किंग मेकर, बट किंग के पास भी प्रोटेक्शन के लिए क्या चाहिए, सोल्जर चाहिए। क्या किंग अकेला किंग हो सकता है? भले ही वो कितना ही पावरफुल है, फिर भी उसको क्या चाहिए होता है, सोल्जर। इतना बड़ा घर, उसके चारों तरफ ये सेफ्टी सिक्योरिटी कितना होता है जैसे पीएम है हमारे, उसके चारों तरफ देखो कितने होते हैं, बुलेट प्रूफ कार, कोई हाथ टच लगा दिखा दो देखे, हैं भाई, वो तो पीएम है, फिर भी देखो कितना सेफ्टी। वैसे ये ब्रेन भी न्यूरॉन प्राइमरी स्ट्रक्चर यूनिट है, किंग है, बट इसको भी क्या चाहिए, सेफ्टी चाहिए। सो फॉर द सेफ्टी पर्पस दिस न्यूरोग्लिया एक्ट एज अ सोल्जर, एक इसका काम करता है सोल्जर का। तो आज हम इसी सोल्जर की बात करेंगे, न्यूरोग्लिया, व्हिच इज द सपोर्टिंग सेल ऑफ nervous system. Neuroglia is the supporting cell of nervous system. It is supporting the nervous system. The basic name of the cell is glial cell. Glial cell. But these glial cell are supporting to the nervous system. That's why it is known as neuroglia. It is supporting to the nervous system. That's why it is known as neuroglia. Otherwise, the name of the cell is glial cell. So sometime exam में glial cell or neuroglia both are same, or the supporting cell of nervous system. All three are for the same thing, neuroglia. In our nervous system, we discuss about 6 type of cells, which is considered as a neuroglia. We start with the astrocyte, very important, oligodendrocyte, ependymal cell, the microglia, as well as the swan cell and satellite cell. These are the 6 cell which is present in our nervous system to protect and support the nervous system. तो start करें types of neuroglia, और neuroglia के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं. Okay. So first, what is a neuroglia? So this is the neuroglia, supporting cell of nervous system or neuron, supporting cell of neuron or nervous system. Neuroglia is the supporting cell of nervous system. First one is the astrocyte. बंद हो गया? अरे वो भी बंद हो गया भाई, चालू ही नहीं किया तो पहले ही बोलना था जब उधर चलाया था। So this is the supporting cell of neuron, astrocyte, oligodendrocyte, ependymal cell, microglia, swan cell and satellite cell. First type of cell, that is astrocyte. In next upcoming test, nervous system जो मैंने स्टार्ट किया था वहां से आपको पढ़ने लग जाना है, पूरा ही आएगा, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, न्यूरॉन टाइप्स जो भी थे, और उसके साथ में कल हमने पढ़ा मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और आज जो पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, और ट्यूसडे को पढ़ेंगे. यस, देख लिया, स्टार्ट करें. फर्स्ट सेल इज एस्ट्रोसाइट. अरे दीज आर द नेम ऑफ सेल्स जो मैं अभी पढ़ाऊंगा वन बाय वन. आपको सिर्फ इतना इंटेलिजेंटली एक ही नाम लिख रहा था, बोलते चलो सर आगे, क्योंकि ये तो पढ़ाऊंगा 6 साल है, जो 6 टाइप्स ऑफ सेल्स है वही तो मैं अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ. तो वन बाय वन पहला सेल लिखना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं, तो उसी को हम समझेंगे यहाँ पे और अंडरस्टैंड करेंगे. फर्स्ट सेल इज एस्ट्रोसाइट. एस्ट्रोसाइट की बात करें यहाँ पे, इट इज द वर्ड विच इज composed by two simple words. One is astro, second one is sight. In case of astro, it is related to star, and in case of sight, it is related to cell. So the astrocyte is a cell which is in star shape. Shape of the cell is star shape. That's why it is known as astrocyte. So if somebody asks you why this cell is known as astrocyte, your answer should be the shape of the cell is. एस्ट्रोलॉजिस्ट जानते हो आप लोग, तारों के वो ध्यान रखते हुए आपकी बताते हैं हाथ, देखा नहीं देखा एस्ट्रोलॉजिस्ट? एस्ट्रोलॉजिस्ट, those people who are believe in astrology, they are completely wrong. Never believe in your astrology or in this type of things. I given one example previously, पहले भी मैंने दिया था example, याद है? It is my personal experience. So I'm not believe in astrology or any other
दिस टाइप ऑफ थिंग्स। मैं किसी जादू टोने में बिलीव नहीं करता हूँ और ऐसा होता भी नहीं है। सो वन डे, एक दिन मैं कहीं जा रहा था विद गर्ल, एक लड़की के साथ में कहीं जा रहा था। सो उसने बोला यहाँ पे एक एस्ट्रोलॉजिस्ट है, बिलीव करता नहीं हूँ इन चीजों में, कि आपको मैं इसकी, ठीक है हम गए, उसका हम गए, भी क्या है, हम दोनों शादी करना चाहे ऐसे चल, बस बिलीव इन, उसी में गिर जाना, बस वो ऊपर ऐसे आप चलाओ अपना हाथ। इट इज अ सेल व्हिच इज लुक लाइक दिस। सो अगर हम बात करें सेल की, अरे इट इज नॉट द मैटर टू क्लैप, इट इज अ सेल व्हिच इज लुक लाइक दिस। और वाओ नहीं, इट्स अ सेल। सो इट्स अ टाइप ऑफ सेल, एक तरह बना देते हैं। इट्स लुक लाइक अ स्टार शेप, जो स्टार होते हैं ऊपर आसमान में वैसा दिखता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अबाउट दिस एस्ट्रोसाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज, ये जो एस्ट्रोसाइट है हमारी बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एंड दैट रोल इज, इट इज help in the formation of triple B. In later on, I will teach you about the blood-brain barrier also in detail. So, astrocyte cell help in the formation of blood-brain barrier. Triple B याद रहेगा? Triple B formation में कौन आपकी help करता है? तो आंसर होगा astrocyte, the star shape cell which help you in the formation of blood-brain barrier. The next concept, that is, it is the largest neuroglial cell. जितनी भी हमारे पास ग्लियल सेल है, उन ग्लियल सेल में सबसे बड़ी सेल अगर आपसे कोई पूछे तो आंसर क्या है? एस्ट्रोसाइट इज द लार्जेस्ट ग्लियल सेल इन ऑल नंबर ऑफ सेल जो है उनमें। And one more thing about this astrocyte, sometime astrocyte combine with oligodendrocyte. Astrocyte combine with oligodendrocyte and form a complex of these two cells. This complex of two cells is known as macrocyte. Oh, sorry, not macrocyte. The complex of these two cells is known as macroglia. Macrocyte तो हम already पढ़ लिया. Macroglia. The complex of these two cells is known as macroglia. So sometime पूछ ले exam में, what is macroglia? The answer should be when astrocyte combine with oligodendrocyte, this complex is known as macroglia. तो start करें astrocyte के बारे में. This is astrocyte. So the first thing is, astrocyte cells are star-shaped cell. Shape of the cell is star shape. The next is the form blood-brain barrier or triple B. It also help in providing calcium and potassium as well as regulate the neurotransmitter level at synapse. कल पढ़ा था synapse, junction between two neuron, and उस neuronal junction के ऊपर जो आपके कैल्शियम और पोटेशियम और उसके साथ साथ में अदर न्यूरोट्रांसमीटर की रिक्वायरमेंट है, दैट इज रेगुलेटेड बाय दिस एस्ट्रोसाइट. एस्ट्रोसाइट उसमें हेल्प करती है रेगुलेट करने में. सो दिस इज ऑल अबाउट द एस्ट्रोसाइट. वन पॉइंट जो आपको मेंशन करना है, एस्ट्रोसाइट कंबाइन विद, इसमें लिखा हुआ नहीं, लिखा हाँ नहीं लिखा हुआ. सो एस्ट्रोसाइट विद ओलिगोडेंड्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, एंड दे विल फॉर्म मैक्रो. मैक्रो का मींस लार्ज, सबसे बड़ा बनाती है. नॉर्मली अगर हम सिंगल सिंगल बात करें तो सबसे बड़ा कौन है? एस्ट्रोसाइट. बट जब ये मिल जाएगी, दो मिलेगी, तब तो और बड़ी हो जाएगी, लार्जेस्ट ग्लियल सेल. लार्जेस्ट ग्लियल सेल. So this is all about the astrocyte first cell. याद रहेगा? So it help in the protection of the nervous system by forming blood-brain barrier, as well as it also providing you the nutrition, the calcium and potassium, or the neurotransmitter regulation. Clear ये? बना लिया? Move करें? The next second cell from cell body. This is the cell body, and these are the projection which is arising from cell body, and these projections are known as dendrites. These are known as dendrites. So in case of astrocyte, there are so many projections arise from cell body. So a cell body of this astrocyte cell having multiple projections which is known as dendrites, and the number of dendrites are multiple, not a few number, it is a huge number, बहुत सारे होते हैं. नेक्स्ट सेल के बारे में बात करें, डिस्कस करें, मूव करें आगे. लिख लिए नेक्स्ट सेल, दैट इज ओलिगोडेंड्रोसाइट. Oliggodendrocyte. I pronounce the word in three steps. One is oligo. Oligo means less. Dendro means dendrites. Cyte means cell. The type of cell which is having less number of dendrites compared to other glial cell or neuron. जो अदर ग्लियल सेल है और न्यूरॉन है उसके कंपैरिजन में जब आपके डेंड्राइट्स का नंबर क्या होगा, कम होगा, लेस होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? ओलिगोडेंड्रोसाइट. सो दिस इज द सेल व्हिच हैविंग वेरी लेस नंबर ऑफ डेंड्राइट्स.
like one or two only. This is the cell, one projection and second projection. This will envelop like this. So आगे पढ़ाऊंगा तुम्हें भी. This type of cell is known as oligodendrocytes. The next point is oligodendrocytes का purpose क्या है? ये कैसे nervous system को help करती है, support करती है? So oligodendrocyte help in the formation of myelin sheath. Myelin sheath. Myelin sheath. As we already know that about myelin, पहले बताया था मैंने न्यूरॉन की स्ट्रक्चर जब पढ़ाई थी तब याद है? What is myelin sheath? So this is the neuron. This is the neuron. These are the dendrites. Cell body. This is the axon, and on the axonal part, this is the sheath which is present on this axon, and this sheath is known as myelin sheath. It is not a single layer sheath, like this is the axon. So this oligodendrocyte cell will envelop like this or this, and it will make layers for how many times? कितनी बार ऐसे राउंड करेगी? So it is approximately nearby 100 layers of cell present around these one neuron. Every neuron has a 100 layered cells around the axon is known as myelin sheath. याद है myelin sheath का purpose? The purpose of myelin sheath is to speed up the conduction. Conduction को speed करना, बढ़ाना, तेज करना, fast करना. That is the purpose of myelin sheath. So myelin sheath, the myelin sheath which is formed by oligodendrocyte, it is only formed in central nervous system neuron. The oligodendrocyte which form the myelin sheath only in central nervous system only. It is not present in peripheral nervous system. Myelin sheath of the peripheral nervous system will be formed by different cell, and myelin sheath of the central nervous system neuron will be formed by different cell. In central nervous system कौन बनाएगा? Myelin sheath कौन बनाएगा? Oligodendrocytes. So oligodendrocytes are responsible for the formation of myelin sheath in central nervous system neuron. याद रहेगा? And myelin sheath, it's a 100 layered sheath. कितने नंबर होते हैं इसमें? 100 layered sheath. So start करें. Oligodendrocyte. Oh God. Oligodendrocyte cell form the myelin sheath around the nerve fiber in central nervous system, and this is the thing. देख सकते हैं आप यहाँ पे बहुत ही कम number of ये आपके sites हैं, dendrocytes. This is the one dendrocyte which envelop like this. This is the next one envelop like this. Third one envelop like this. What is myelin sheath? आप लिख देंगे. Myelin sheath is a 100 layered sheath around axon. किसके around? Axon के around. So number of layered in a myelin sheath, your answer should be 100 layer. कितनी layer होगी? 100 layer. Why it is known as oligodendrocytes? Because it is having less number of dendrites. That's why it is known as oligodendrocytes. When oligodendrocyte combine with astrocyte, this is known as macroglia. Sorry, large macroglia. क्लियर है ये? वो करें. अभी तक दो ही सेल पढ़ी हमने, एस्ट्रोसाइट एंड oligodendrocyte. Astrocyte largest cell, star shaped cell, and help in the formation of blood brain barrier. Next cell is third one, and this is an appendymal cell. Very important cell, appendymal cell. Appendymal cell की बात करें, appendymal cell is a type of neuroglial cell which is help in the formation of कहाँ होती है ये? हाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो होगी, पर कहाँ पे होगी? कहाँ बनाती है? So it help in the formation of choroid plexus, a structure which I think you know about that, और कभी आपने सुना होगा, नहीं सुना? Choroid plexus, बहुत डरावना नाम है, सुना है नहीं सुना है? What is choroid plexus? So it's a structure which is responsible for the formation of CSF. I will explain in detail how the choroid plexus is formed. Not अभी नहीं, अभी बढ़ाएं, बाद में वैसे मुझे CS से पढ़ाना है, वहां पे आएगा choroid plexus, फिर वहां बनाएंगे हम, बनाएंगे नहीं बनाएंगे, और अभी बनाना है बाद में बनाना है? हाँ सर अभी तो रहने दो, क्या फालतू अड़े करनी है. So we are discussing about the appendymal cell. Appendymal cell. Appendymal cells are the cells which is mainly present in inner part of the nervous system, central nervous system. Inner part अंदर कुछ होता है, ब्रेन के अंदर कुछ inner part होता है. Inner कब होगा? जब अंदर से कुछ खाली होगा, जैसे ये रूम है, तब हम बोल सकते हैं दिस इज द इनर सरफेस एंड ऊपर वाली आउटर सरफेस. अब ये रूम पूरा अंदर पूरा ऐसे सीमेंट भरा पूरा पैक होता है, तो आप बोलते हैं इसका इनर सरफेस कहाँ होता है? क्या सिर्फ क्या होता? आउटर. सो क्या ब्रेन में भी ऐसा कुछ होता है जैसे इनर एंड आउटर होता है? क्या होता है इनर? वी हैव स्पेस इनसाइड द ब्रेन और नॉट? होता है कि नहीं होता? खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान, जिसमें आपको भरना है पट पट के, फिर वो भर जाता है ऐसे, नहीं तो फिर वो खाली रहता है लाइफ टाइम के लिए. तो क्या होता है?
पता नहीं सर क्या होता है, हमें क्या पता है। Yesterday evening after the class I went to a shop and I asked to the shopkeeper about that equipment. I went to buy an inverter. गांव गांव में भेजना था, उसके लिए मैंने इन्वर्टर पूछा उससे, तो उससे उसने पूछा, मैंने इट इज कॉपर और इट्स एल्यूमिनियम इन्वर्टर। तो आई डोंट नो, मुझे क्या पता, ऊपर वाला जाने। ये है, आपको चाहे तो ले जाओ, नहीं तो मत ले जाओ, आपकी मर्जी, मुझे नहीं पता एल्यूमिनियम कॉपर कुछ। सो फिर आप क्यों बच रहे हो? हैं? भाई कोई थिंग्स जो है, अगर मैं कुछ दे रहा हूं तो मैं बोलूंगा ना कि ये है। अब आप वेपन डायमंड सेल, आप पूछो क्या होती है सर, मुझे क्या पता, ऊपर वाला जाने, आप पूछो चाली को। सो आप लोग भी ऐसे सर, पता नहीं, ब्रेन में पता नहीं ऊपर वाले ने बनाया होगा तो होगा सर, नहीं तो पता नहीं। अरे होता है, क्या होता है, क्या करें अब। दिस इज द ब्यूटीफुल ब्रेन, दिस इज द मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड एंड हियर द थैलेमस। ऐसा ही कुछ होता है, नहीं होता है? It is not that much beautiful. So inside the brain, here we have the which ventricle? Lateral ventricle, right and left दोनों तरफ, एक इधर एक इधर, होता नहीं होता है? आगे पढ़ाऊंगा। Then we have a third ventricle. ये side view है, इसलिए थोड़ा ऐसे ही दिखेगा आपको। And then we have fourth ventricle. Then it will be continue with central canal and subarachnoid. तो ये जो स्पेस होता है ब्रेन के अंदर, खाली स्थान होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। सो दिस एपेंडाइमल सेल बेसिकली दिस, मैं ये तो लिटिल व्यू, इधर से ऐसे खड़ा आदमी इधर से देख रहे हैं, अगर इसको ऐसे बीच में से चीर दें, दो पार्ट कर दें इसे, फिर इधर साइड से देखो आप, तो आपको ऐसा दिखेगा। अगर आप इसको ऐसा कट करके ऐसे कट कर दें पार्ट को, पूरा बॉडी को हाफ कर दें बीच में, तो फिर सामने से कैसा दिखेगा? फ्रंटल व्यू। सो इट विल बी लुक लाइक दिस, दिस इज द लेटरल वेंट्रिकल, राइट एंड लेफ्ट। देन वी हैव a third ventricle. So this will be the third ventricle. After this third ventricle, next we have the duct. Then it will be fourth ventricle. Diamond say fourth ventricle. Then canal into the spinal cord, and here we have the space which is known as subarachnoid space. This is the subarachnoid space, and this is your whole CSF जो जहाँ पे फ्लो करता है, वो वाले सारे पार्ट ब्रेन के अंदर कहाँ कहाँ CSF फ्लो करता है। So this ependymal cell line all the inner part of this nervous system like this. It will present here. Everywhere this cell is present, ependymal cell. This green cell is an ependymal cell. So it line the nervous system. इसको हम क्या बोलते हैं? It line the nervous system inner part. It is also continue like this. Now I think you have a clear concept. Yes or no? समझ में आया? Very good. नहीं आया तो घर पे पढ़ के आना है. Clear? So ependymal cell line the central nervous system. Second thing, it also help in the formation of choroid plexus. I will tell you the exact structure कैसे बनता है. So यही है, इसके बारे में देखते हैं. Next, ependymal cells line the ventricle of the brain and the central canal of spinal cord. And remember that. जब भी हम कोई भी सेल ड्रॉ करते हैं, whenever we are drawing any type of cell, and if that cell is related to in the part where secretions are moving up or down, like in your trachea, in your spinal cord, in our ventricles, सब जगह पे क्या होता है? CSF जो है ऊपर नीचे जाएगा, ट्रेकिया में secretions अप डाउन होंगे. So ऐसे सारे पार्ट पे जो सेल होती है, that are the specific type of cell which is known as ciliated cells. Ciliated मतलब इनके ऊपर क्या होती है? Cilia present होती है. There is specific type of projection which is present on this cell. Like this is the ependymal cell. It is not in this cuboidal shape, it is in columnar shape. ये कौन से shape में होती है? Columnar shape. So it's a cell like this. This is an ependymal cell, group of ependymal cell. They are having projection like this, and these projections are known as cilia. Ciliated columnar epithelial cell. Cilia. What is the function of cilia? Cilia like this is the cilia. It is attached with the cilia. Cell के साथ attached है. So it's just doing like this. It is just. So इससे क्या होगा? It's just moving the secretions in up or down. जो भी secretions आ रहे हैं उनको या तो up या down side में भेज रही है. तो जो secretions है lungs में है तो उनको ऊपर लाने का काम कौन करता है? रात भर ये cilia ऐसे करती है, तो secretion यहाँ आ जाते हैं, फिर सुबह ऑफ करके आप बाहर निकाल देते हैं. होता है? दिन में तो नहीं आते ऐसे. क्यों? क्योंकि रात भर आप रेस्ट करते हैं तो इकट्ठे होकर ऊपर आते हैं, फिर सुबह बाहर आते हैं. ये कौन लगता है ऊपर? सीलिया. सीएसएफ पूरा घूमते रहता है अंदर बॉडी में. मोटर लगा के अंदर पंप लगा के बटन दबाते हैं, सीएसएफ फ्लो स्टार्ट. बंद, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, बंद हो गया है, ऑटोमेटिक होता है. सो ये कौन करता है फ्लो? Cilia. So which type of ependymal cell, which type of cell? The answer should be it's a ciliated cell. So formed by ciliated columnar cell. It exchanges material between the brain and the CSF. Remember that brain is a structure. It's a highly sensitive structure or highly sensitive to the substances. जितने भी substances होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा sensitive structure है. And उसकी अगर हम बात करें sensitivity की, so it required filtration. जब हम सीले इस ब्रेन की बात करते हैं तो ब्रेन के पास कोई भी जा नहीं सकता है. होता है जैसे बहुत सारे ऐसे वीआईपीज होते हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं जहाँ पे हर एक पर्सन को जाना अलाउड नहीं होता है. वहां पे जाने से पहले क्या होती है? मल्टीपल लेयर्ड फिल्ट्रेशन होता है. जैसे प्राइम मिनिस्टर है, मैं जाके बोलूं मुझे मिलना है प्राइम मिनिस्टर से, तो मुझे जाने देंगे? यस और नो? नहीं जाने देंगे. भाई क्यों? तू कौन है भाई? तू कौन सा प्राइम मिनिस्टर का भाई है? कोई और है? हमें तो नहीं जाने देंगे.
उसके लिए अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल भी जाता है, यू हैव अ प्रोसेस टू टेक अपॉइंटमेंट, वो भी आपको वहां नहीं मिलेगा उसके घर पे कहीं ऐसी जगह पे, वो पब्लिक प्लेस में कुछ है तो वहीं पे ऐसे हाथ लगाने के लिए मिलेगा, हाँ मैं भी हूँ कहीं पे, हमें लग रहा है कि वो हमें हाथ दे रहा है ऐसे। प्राइम मिनिस्टर ऐसे करता है, लोगों को लगता है वो मुझे ही दिखा रहा है हाथ, अरे वो आपको नहीं, वो सबको दिखा रहा है उसको, सब अगली बार मुझे ही देना है वोट। सो ब्रेन इज आल्सो वेरी सेंसिटिव एंड इट आल्सो टेक सेलेक्टिव थिंग्स। ब्रेन भी सिर्फ क्या लेता है, सेलेक्टिव थिंग को लेता है, बहुत सेलेक्टिव आदमी है, इसको हर कुछ पसंद नहीं है। इट्स लाइक न्यूट्रिशन में सिर्फ ग्लूकोज, इट ओनली टेक ग्लूकोज, बाकी कुछ नहीं देता है, ना पेट चाहिए ना आपको कुछ प्रोटीन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट ग्लूकोज। सो अदर थिंग्स, अगर बॉडी में ग्लूकोज का अमाउंट कम होगा तुरंत आपको स्टार्ट हो जाएगा सिर दर्द होना, चक्कर आना, ड्राउजी होना, होता है जैसे ही चाय का नशा उतरता है आपका, सिर दर्द स्टार्ट है। फिर इलाज क्या है, भारत में सिर दर्द का एक ही इलाज है, सिर दर्द हो रहा है चाय पी लो, चाय नहीं होता है, चाय पीने से क्या मिलेगा, ग्लूकोज, और ग्लूकोज अंदर जाएगा और ब्रेन बोलेगा बस यही तो चाहिए था मुझे, मैं बिल्कुल ठीक, और आप सिर दर्द से क्या हो गए, ठीक हो गए। सो ये जो सिलेक्शन करता है कौन अंदर भेज जाना है कौन नहीं जाना है, वो कौन रेस्पॉन्सिबल है, एपेंडाइमल सेल विल हेल्प द ब्रेन। एपेंडाइमल सेल एक लेयर का प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, और ये जो आपका जैसे वो एक्सरे मशीन होता है जिसमें आप स्कैन होते हैं, वैसे स्कैनर है जो स्कैन करेगा, इसको बोलेगा नहीं यू आर नॉट अलाउड, यू आर अलाउड गो। तो ये आगे हम पढ़ेंगे which thing is allowed through the blood brain barrier or which thing is not allowed through the blood brain barrier in detail later on when I will teach you about the blood brain barrier in detail next, ठीक है। The next cell which is very small in the size, that's why the name of this cell is microglia. Micro means small and glia means glial cell, glia a glial cell. So it is the smallest glial cell. If somebody asks you which of the smallest glial cell, answer should be microglia is the smallest glial cell. And अगर हम इस सेल की बात करें तो इट इज आल्सो नोन एज द फेगोसाइटिक सेल ऑफ नर्वस सिस्टम, माइक्रोग्लिया इज द फेगोसाइटिक सेल ऑफ नर्वस सिस्टम, एंड रिसेंटली वी डिस्कस अबाउट द ब्लड, एंड वहां हमने पढ़ा भी था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फेगोसाइटिक सेल इन आवर बॉडी। कौन बनाता है फेगोसाइटिक सेल, मोनोसाइट्स आर रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ फेगोसाइटिक सेल। तो माइक्रोग्लिया सेल कहां से बनी है, ब्लड के व्हाइट ब्लड सेल के मोनोसाइट से। माइक्रोग्लिया सेल इज अ टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, इट्स अ टाइप ऑफ मोनोसाइट, व्हेन इट प्रेजेंट इन ब्लड इट इज मोनोसाइट, व्हेन इट प्रेजेंट इन ब्रेन इट इज माइक्रोग्लिया। So microglia is the smallest neuroglia as well as it derived from monocyte. It is the phagocytic cell of nervous system. आपके nervous system का phagocytic cell कौन सा है, तो आंसर होगा the microglia is the phagocytic cell of nervous system. याद रहेगा। Next, वो करें। Next, microglia is the smallest neuroglial cell and it is derived from monocyte. It is the phagocytic cell of nervous system. If you really want to see the microglia, you require a microscope because it is a very small cell and currently we don't have any microscope, so we are not able to see the microglia. But for you, I have this pictures. ये क्या है, microglia. So this is the microglia which is very small in the size. Monocyte, sorry, the first one is astrocyte, second one is oligodendrocyte, third one is ependymal cell, microglia. The next fifth one is the Schwann cell. Fifth Schwann cell. मूव करें। लिख लिया, मूव करें। अरे जल्दी करो, अभी बहुत सारा पढ़ना है आज, अभी रोक दिया, अभी तो बहुत बाकी है। Like we discuss about the oligodendrocyte, the Schwann cell is also the type of cell which is responsible for the formation of a myelin sheath. Myelin sheath. So myelin sheath present in central nervous system as well as in peripheral nervous system. So this Schwann cell is responsible for the formation of a myelin sheath in the peripheral nervous system. In central nervous system, oligodendrocyte. In peripheral nervous system, Schwann cell. So there are two types of myelin sheath. One is in central nervous system. Second one is peripheral nervous system. If it is in central nervous system, then oligodendrocyte cell is responsible for the formation of this myelin sheath. And if it is in the peripheral nervous system, then Schwann cell is responsible for this myelin sheath. Now, one question which asked in the exam about this cell is, which of the following is the largest glial cell in peripheral nervous system? क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे पूछ लेते हैं, हम पढ़ते हैं which of the following is the largest glial cell, आपको जो है largest astrocyte लिख दो, ऑप्शन नंबर ए भी होता है astrocyte, बट उसको थोड़ा सा केयरफुली पढ़ना है। इन द एंड दे आर आस्किंग अबाउट which of the following is the largest glial cell except का मतलब सॉरी इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यहाँ पे क्या लिखा होगा, लार्जेस्ट ग्लियल सेल इन पीएनएस। सो पीएनएस का पूछा है तो मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की सेल पढ़नी है। अब हम बात करें एस्ट्रोसाइट, क्या होता है एस्ट्रोसाइट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देन थर्ड एपेंडाइमल सेल, माइक्रोग्लिया इज द स्मॉलेस्ट वन, भले वो बाहर भी होगा तो स्मॉल है वो तो, एंड द फोर्थ वन, फिफ्थ वन इज स्वान सेल, इट इज प्रेजेंट इन
So this is the first cell which is purely present in peripheral nervous system, and it is larger than other cell which is present in peripheral nervous system. So largest glial cell in peripheral nervous system. Major glial cell in peripheral nervous system, and it form myelin sheath in peripheral nervous system. This is the cell. यहाँ पे swan cell जो है ये है. This blue color cell is the swan cell. It is not swan cell. It is the swan cell. And you will be see like ये दिख रहा है ऐसे sheath दिख रही है. ये जैसे वो टेप आता है चिपकाने वाला ऐसे राउंड होके वो उसका लेयर होती है बहुत सारी. Same it will be rolled it like this, multiple layered के अंदर ऐसे रोल किया होगा. So this is the swan cell. Move करें. So last cell is the satellite cell, which is not directly protecting the nervous system. The satellite cell is the type of cell which protect the peripheral neuron or peripheral glial cell. Swan cell जो है इसको protection provide करने के लिए कौन है? एक और cell है वो है आपके पास satellite cell. So the next one, the last one is satellite cell. नहीं लिखा? So neuron and last cell, satellite cell, it protect. Satellite cells are the glial cell present in the exterior surface of peripheral nervous system neuron, and it provides physical support to peripheral nervous system neuron. This is the satellite cell. So these are the, this blue are the swan cell, and these purple are the satellite cell which support the peripheral nervous system neuron. So satellite cells are only present in peripheral nervous system, not in the central nervous system. This is all about the glial cell or neuroglia. If you have any doubt, you can ask. Otherwise, we'll move forward on the next topic. 6 type of glial cell clear है. Move करें. Now we are moving on the next topic. याद रहेगी swan cell form the myelin sheath in central nervous system oligodendrocytes. Move करें. Next, meninges. So meninges की बात कर लेते हैं. आप थोड़ा समझ लेंगे उसके बाद लिखने के लिए तो आपके पास टाइम ही टाइम है. क्या होती है meninges? Meninges की बात करें तो meninges are the protective covering of the central nervous system, brain and spinal cord. Protective covering of the brain and, as like in our mobile phone we have a protective cover. ऐसा होता है कवर होता है चारों तरफ, आगे भी हम टेम्पर लगा के रखते हैं, पीछे चारों तरफ होता है. सो ये किसके लिए है? इट्स अ प्रोटेक्टिव कवर to protect the mobile phone. As like mobile phone in our body we have a brain, and brain is also a very sensitive and very delicate organ, and it required a very degree of protection. So it first protection is provided by meninges. So what is meninges हम पढ़ते हैं यहाँ पे और one by one समझते हैं. So first हम डिस्कस करेंगे, आप बनाएंगे नहीं, समझेंगे, मैं गलत भी बना सकता हूँ. I don't know about meninges. So आप बनाएंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनाना है. This is the midbrain, then pons, medulla, spinal cord. This is the spinal cord. Here we have the beautiful cerebellum. ये पीछे ये ऐसे है ये आदमी इस तरह से. ये पीछे क्या है? Cerebellum. Okay. So this is the brain and this is spinal cord. In our brain, there is the first membrane which is in real addition with brain. There is no gap between this membrane and brain neuron or brain surface. It is the membrane which is actually attached to the brain surface. जो brain के surface से actually contact में होती है वो membrane हम सबसे पहले बना रहे हैं, purple color. And this membrane which is very near to the brain, very past to the brain, that's why it is known as P4 pass and P4 pyometer. याद रहेगा? Brain के सबसे पास में कौन सी membrane होती है? P से याद रखो pyometer. So in purple color it is known as pyometer. So I'm writing the name here. This is the pyometer. It is the first covering of the brain which is adhered to the brain surfaces, completely attached to the brain surface. जो brain से पूरी तरह से चिपकी हुई रहती है वो कौन सी membrane है? Pyometer. As we know that the spinal cord is ended at the L1 level. It is ended at the L1 level in adult. So the pyometer is also ended at the L1 level. But the extension of the pyometer, which is moving, it is approximately 20 centimeter in length, and it reaches up to the last level at coccyx. The extension of the pyometer reaches to the last part of the vertebral column, that is coccyx. So it is not this pyometer, it is the fiber which is rising from pyometer. So sometime question पूछ लेते हैं. The name of this fiber is phylum terminate. This is the phylum terminate. So sometime examiner will ask you the phylum terminate is an extension of which membrane? Answer should be it is the extension of a pyometer. याद रहेगा? And it is approximately 20 centimeter in long. So this whole purple theory is related to pyometer. After this pyometer,
Next membrane which we have, the second membrane, it is not attached to the brain surface. It is not attached to the brain surface, but it is attached to the pyometer. Remember that this membrane does not attach to the brain surface, but attached to the pyometer. How I will draw you? Just wait. So this is the second membrane which is known as arachnoid matter, and this will be terminate at the level of S2, at the level of S2, sacral vertebra level 2, and this green membrane is a arachnoid matter. This is an arachnoid matter. So as I mentioned that this green membrane or the arachnoid matter does not attach to the brain surface but attach to the pyometer. How? See, this green membrane attached to the pyometer like this. It is a lateral view, that's why it is looking like this. These are the fibers. These are the fiber which attaching to the pyometer with arachnoid matter. And if you are seeing this attachment in a microscope, ये बेसिकली हम साइड से ऐसे देख रहे हैं कट करने के बाद, इसलिए ऐसा दिख रहा है. जैसे मैं आपको बताता हूँ इसमें, this is the one membrane, this is a pyometer, and upper one is a, this is the pyometer and this is the arachnoid matter. So in between these membrane ये ऐसे fold हो, ऐसे फाइबर होंगे, ये one fiber, two fiber, three fiber, ऐसे पूरा long fiber होगा पूरे brain का राउंड, जो इसके बीच में इनको अटैच करके रखेगा. So these are the fiber which is known as a denticulate fiber. Which fiber? Denticulate fiber. Okay, now at this level, when we are discussing about this arachnoid matter and this denticulate fiber or the pyometer, there will be a physiological space. It is not pathological, it is a physiological space which is present between pyometer and arachnoid matter. This space, this physiological space which is present between pyometer and arachnoid matter, this physiological space is known as sub. This is the brain. Over the brain, pyometer. Over the pyometer, arachnoid matter. So this is the space which is present below the arachnoid matter or below the pyometer. Below the arachnoid matter, below the pyometer होता तो नीचे तो brain आ गया, उसमें space कहाँ है? Space किसके नीचे है? Arachnoid के नीचे है. Whenever something is below that thing, that is known as sub, and something is above, that is known as epi. That is known as epi. जो कुछ ऊपर होता है उसको हम बोलते हैं epi, और नीचे की तरफ sub. So यहाँ पे arachnoid matter के नीचे की तरफ space, there is a physiological space which is present below the arachnoid matter. That's why it is known as subarachnoid space. It is known as subarachnoid space. So this is the subarachnoid space, and it is very important space. In this subarachnoid space, water-like fluid present, and this fluid is known as CSF. So this is known as CSF, subarachnoid, cerebrospinal fluid, CSF. So अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि CSF is present in which space, answer should be in the subarachnoid space in between pyometer and arachnoid matter. याद रहेगा इतना तो. Now the next third protection or the third protective membrane which is here, outermost membrane. This is the very tough membrane, and this tough membrane is present here. It's a very interesting membrane, and it is a very, very strong and very tough membrane, and you have to remember about this membrane for your exam purpose. So this membrane is known as the durameter, which is present outermost, very dur from the brain. That's why durameter. It is S4, last at the S4. So one question which asked in the exam, the meninges are ended at the which level? Meninges are ended at which level? कहाँ पे last होती है meninges? अभी लिखा मैंने at S4. Last meninges कहाँ तक reach होती है? S4. After S4 there is no meninges. Only one extension which is arise from the pyometer, which is known as phylum terminate, that reach to the last part of your vertebrae column. This is the durameter, and what is the interesting thing about this durameter? That is the durameter in I used all the color. No color is remaining. Sorry. In durameter, when we are seeing the structure of this durameter at the brain level, this durameter is having double layer. At the brain level, this durameter is having double layer, but it is very important that it is ended at the part where the spinal cord is started. यानी durameter की दो लेयर होती है, but कहाँ तक होती है? जहां तक ब्रेन होता है. जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होता है, ये मेम्ब्रेन क्या हो जाती है? एंड हो जाती है. सो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले, इन ब्रेन लेवल द नंबर ऑफ ड्यूरामीटर इज 2, बट इन स्पाइनल कॉर्ड द नंबर ऑफ ड्यूरामीटर इज 1. याद रहेगा? इन ब्रेन द ड्यूरामीटर व्हिच इज, ओके, फर्स्ट द नेम ऑफ दिस मेम्ब्रेन इज ड्यूरामीटर, जो हम यहां मेंशन कर देते हैं. दिस इज द ड्यूरामीटर,
So here I'm writing this is a durameter. याद रहेगा? There is a space which is present between arachnoid meter and durameter. It is the space which is present between arachnoid meter and durameter. Now this is arachnoid meter and this is durameter. The space is below the arachnoid or below the dura? Below the dura. So name of this space is subdural space. Very easy to remember. So this time the space which is present between arachnoid meter and durameter is subdural space. This space does not have any fluid or anything. कुछ भी नहीं होता है, खाली space होता है. It's empty space and normally it is not present. Normally it is the membrane is attached to the arachnoid, पास में ही रहती है. In some pathological condition this membrane will be separated, but normally it is not separating. This is attached to the arachnoid meter. अब important जो आपको समझना है वो है ये वाला part. This black color membrane which is present toward the meninges or toward the bone. Black membrane. दो membrane बनाई मैंने, black और एक red durameter की. One durameter in black color, one durameter in red color. Which is the inner side? Black. Which is outer side? Red. The membrane which is present toward the brain side or toward the other meninges like pyometer and arachnoid meter. That is in which color? Black color. This black color membrane which is present toward the meninges side, this is known as meningeal durameter. Meningeal durameter. Very easy to remember. The membrane which is present toward the meninges is known as meningeal durameter. And this red color, it is present toward the bone side or brain side? Bone side. This is the bone. Over this bone, there is a membrane which is enveloped. It is known as, कौन सी membrane bone के ऊपर होती है? This is the bone. Around bone there is a membrane. Around that is peri. Bone is ostia. Ostia बोलते bone को. That is known as periosteum. नहीं सुना? How is it to remember the name of this membrane? Periosteum. Peri means around. Osteum means bone. जो bone के चारों तरफ होती है उसको बोलते हैं periosteum. So this is the bone and this is the periosteum and this is the red membrane. So this membrane is present toward which membrane? Periosteum side. That's why this red membrane is known as, which name of this membrane is? Periosteal durameter. Periosteal durameter. So this is clear now. In durameter, when we are discussing about at the brain level, the durameter is divided into two parts. The first one is meningeal durameter and second one is periosteal durameter. Meningeal durameter which is present toward the meninges, periosteal durameter which is present toward the bone side, periosteum side. Yes, याद हो गया? There will be no space in between meningeal and this periosteal durameter physiologically, but pathologically they can easily separate it and we will create a space. One more point which you have to keep in your mind. I'm drawing one more picture for you. So it is very difficult to draw the pictures, but क्या करें, बनाना पड़ेगा आपके लिए. So this is the two lobe of cerebrum. It is frontal view. ऐसे खड़ा करके आदमी को ऐसे चीर दिया आपने पूरा ऊपर से फिर देख रहे सामने से कैसे दिखे. So this is the frontal view. हाँ चीर दिया. It will be look like this. Then we have the midbrain, then pons, then medulla, then spinal cord. So intelligent you are. You know everything before me. First membrane is, which color we used? क्या use किया था उधर? यही? ये नहीं था? Oh, very good. You know the color also, very good. So this is the first membrane. This is known as pyometer. यही मैंने बोला था बनाना नहीं है. मैं फिर बताऊंगा क्यों नहीं बनाना था. कुछ तो गड़बड़ हुआ है ना. Second color is green. Green के बीच में क्या होगा? Space होगा. You people are not understanding my emotions, my words. You are just drawing what I'm drawing. जो मैं बना रहा हूँ बनाए जा रहे हैं. Yes. Now the real thing जो आपको ध्यान रखनी है. The first membrane we draw in black color, right? So this is the which durameter? This is which durameter? Name of this durameter? Meningeal durameter. Very good. And the next we have. Now this is the very important thing which you keep in your mind. That is, this is the periosteal durameter. So normally physiologically, the periosteal durameter and meningeal durameters are attached with each other, except one place. Except one place. I think now you are seeing that place also. देख रहे हैं कौन सा place है? This is the place. दिख रहा है? Here we have a triangular shaped space. So the meningeal durameter and periosteal durameters physiologically separated at a single place, and that separation will form a triangular shaped area, and this area is known as, this triangular shaped area is known as, name of this area is, this is known as dural venous sinus. This is known as dural venous sinus, which is responsible for whole the venous drainage of brain or nervous system. Nervous system का venous drainage कौन करता है? This dural venous sinus. All the vein collect into this vein, this dural venous sinus. सारी vein यहाँ आके blood डालेगी और ये फिर कहाँ भेजेगा? Vena cava, जो आपका superior vena cava उसके अंदर. Yes.
सो ये इसमें बनाना पॉसिबल नहीं था, इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ इन दिस बिकॉज इट इज अ साइड पिक्चर, यहाँ पे पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने इसको यहाँ बनाया। और ये आपको समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आई थिंक अब हमने यहाँ पे एक और जो आपको याद रखना है, स्पेस, एक स्पेस बच गया, लास्ट होता है वो होता है एपिड्यूरल स्पेस। सुना है? एपिड्यूरल स्पेस प्रेजेंट है बिटवीन एपिड्यूरल स्पेस, लाइक मैं पूछता जाऊंगा, आप आंसर देते जाएंगे। फर्स्ट दिस स्पेस, नेम ऑफ दिस स्पेस, सब इलेक्ट्रोड स्पेस, नेम ऑफ दिस स्पेस, subdural space. Now we have a third space which is known as epidural space. Epi means upon, ऊपर, किसके ऊपर? Dural यानी dura. The space which is present above the durameter is known as epidural. But किसके बीच में ऊपर क्या होता है? वो भी तो important है, हम understand करना. So in literatures or in books, in brain, these are the two membrane. One is the meningeal durameter and one is the periosteal durameter. And it is believed that this meningeal durameter is always present toward the, it is have a potential power or have a attraction toward these meninges. अभी इनका नाम ही हमने क्या रखा? meningeal. क्यों रखा? क्योंकि meninges के पास जाना पसंद करती है. This meningeal durameter likes to move toward other meninges. And why this membrane is known as periosteal membrane? Because it is like to go toward periosteum, toward the bone side. That's why the periosteal durameter. So when these are two membranes, one is meningeal durameter, one is periosteal durameter. If this membrane is going toward this side meninges and this is going toward the bone side, then there will be a space between these two membrane in brain only, not in spinal cord. ये सिर्फ कहाँ होती है? Brain में. In between these two membrane, this space is known as subdural space in the brain. Brain के अंदर subdural space कौन बनाता है? The meningeal durameter and the periosteal durameter. In between the space which is known as the epidural space. But in the spinal cord there is a problem. In spinal cord durameter is having only one membrane. Then दूसरी membrane कहाँ से आएगी? So देखें आप यहाँ पे क्या होगा? This is the bone. ये क्या है? Bone, vertebrae column. Around this vertebrae column there is a membrane which is known as, क्या होता है अभी तो बताया, क्या होता है membrane इसके around? Periosteum. Over this periosteum we have one more membrane, and this one more membrane is known as over this periosteum there is again one more membrane. This membrane is known as this yellow color membrane. Name of this membrane, ligamentum flavum, which is very important membrane for epidural insertion. Ligamentum flavum. So in between this ligamentum flavum and this durameter there is a space which is known as the epidural space in spinal cord. So brain में epidural space अलग membrane बनाती है और spinal cord में epidural space अलग membrane बनाती है. Brain में कौन बनाएगा? Meningeal durameter and periosteal durameter. Spinal cord में ligamentum flavum and periosteal periosteal durameter है. और only durameter, no ligamentum periosteal or no this meningeal durameter. Spinal cord में सिर्फ एक ही होती है, durameter and ligamentum flavum. So this is the basic about meninges. अब हम पढ़ेंगे इनको डिटेल में. स्टार्ट करें? यस, स्पाइनल कोड वाला बताएं. ये हो गया, आपने बना लिया? So this is the spinal cord. This marker is like a spinal cord. Around this spinal cord, first membrane is pyometer. Over the pyometer, second is arachnoid meter. After the arachnoid meter, we have a single membrane in spinal cord that is known as durameter. So like this, my hand is like a durameter. This is a durameter. After durameter, we have a series like this is the vertebrae column. जो मेरा vertebrae column है, मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूँ यहाँ पे. So this is the vertebra column. This is one vertebra column. Over this vertebra column, one membrane which is completely covering this vertebra column. This is known as the first membrane. It is known as present around the bone is known as periosteal membrane. So this is periosteum. Over this periosteum, one more membrane which is surrounding inner part of this vertebra column only, not outer part, only the inner part. So this is the inner part. Here we have one more membrane. This is known as ligamentum flavum. Ligamentum flavum. After ligamentum flavum, we have the durameter. This after durameter we have the arachnoid meter, and after arachnoid meter we have the pyometer, and then we have the spinal cord. This is the spinal cord. So this is the subarachnoid space, this is the subdural space, and this is the epidural space. Clear? बना लिया ये? Then how it is possible in 1 minute? Membrane is pyometer. Remember the spaces, which is very important to understand the bleeding, types of bleeding, which we discuss later on. The subdural hematoma, epidural hematoma, the subarachnoid hemorrhage or hematoma, and sub inner side of the brain. क्या होगा? Intracranial hemorrhage, ICH, intracranial hemorrhage. So 4 टाइप के हेमेटोमास में पढ़ाऊंगा आगे, एंड उसको आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए. इन स्पेस को कम से कम, वो तो आपको मैं पढ़ाऊंगा बाद में, पर स्पेस पता होना चाहिए किसके किसके बीच में प्रेजेंट होता है. याद रहेगा? मूव करें, हटा दें? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ अगेन. सो आपने बना लिया हो तो मैं हटाता हूं, बाकी नहीं है. इधर पूरा बनाया ना, ये देखो यहाँ पे
इधर इन्होंने पूछा था अभी, कहाँ गया ये देखो, दिस इज द ब्लैक वन, इज अ बॉन्ड, ये बॉन्ड है, ये जो आपका प्रेजेंटर मेरे पास है ये क्या है, बॉन्ड, वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है दैट इज पेरिओस्टियल मेम्ब्रेन, पेरिओस्टियम, पेरिओस्टियम के ऊपर एक और मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लिगामेंटम फ्लेवम, और इसके बाद आगे आएगा ड्यूरामीटर, सो ये ड्यूरामीटर इधर वाला और ये हैंड लिगामेंटम फ्लेवम, दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको हम बोलेंगे the epidural space. This is the simple. So ligamentum flavum is a membrane which is present over the periosteal membrane. The periosteal membrane which is present around the bone. बना लिया? CSF कहाँ flow करेगा? Subarachnoid space. First membrane is filament. The two layers of durameter. One is meningeal durameter. Second one is periosteal durameter. मूव करें और बना लिया. It is looking beautiful or not? Sometime मुझे लगता है I'm not drawing very well. मैं drawing अच्छा ही बनाता हूँ. बनाता नहीं हूँ. I'm not drawing. अरे बनाता नहीं हूँ, ये बन जाता है पता नहीं. अगर मेरे को बोले ये बनाना है तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ड्रॉ करता जा रहा हूँ, ये होता है ये होता है, तो ऑटोमेटिक बन जाता है. बनने के बाद पता चलता है कि ठीक बना है, पहले नहीं होता, ऐसा कभी नहीं बना सकता मैं, नोटबुक में नहीं बना सकता कभी. बना लिया. अरे बस करो, अभी पूरा नर्वस सिस्टम इसी से पढ़ना है आपको. होल नर्वस सिस्टम हम सिर्फ ड्राइंग ही बनाएंगे क्योंकि उसमें यही है. तो आपने बना लिया ये, मूव करें. सो अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद हम डिटेल तो थ्योरी में लिखा हुआ उधर, आपको लिखना नहीं है. लेफ्ट साइड में कुछ नहीं था. दिस इज फ्रंटल व्यू, दिस इज लेटरल व्यू. हियर वी हैव द, oh it's not beautiful. These are two lateral ventricle, then third ventricle, then this is the space, this is like this. Oh, it should be like this. It will be like this, and then it will be going like this. Oh no, this one. So this is the structure जो आपको याद रखना. आगे बढ़ाऊंगा मैं ventricles अभी, थोड़ी देर वेट करें. Here we have a beautiful thalamus. Thalamus, above the thalamus epithalamus, below the thalamus hypothalamus. वो करें. Next, first membrane is pyometer. Few points about the pyometer, then we'll move on that membrane. Pya लिखना नहीं है, उधर कुछ और लिखा होगा. पायामीटर से पहले वो लिखना पहले, उसके बाद ये लिखेंगे, समझ लो बस. सो पायामीटर की बात करें, पाया वर्ड इज a word which is derived from Greek language, and meaning of this paya is very soft or delicate. So paya is a type of membrane which is a type of soft or delicate matter, means membrane, or sometimes it is known as mother. Matter is membrane, or sometimes it is known as mother. So examiner will ask you which of the following membrane is known as soft mother or delicate mother. The answer should be pyometer. You know that when a baby born, बच्चा जब born होता है, at that time the baby is very soft and very delicate. Yes or no? And only the person who can care that baby is the mother. She know that how to handle that delicate structure, and she care very well. And that's why we are here. तभी तो हम यहाँ हैं. Care हुई इसलिए. ऐसे किसी पिताजी को दे दिए होते तो वो ऐसे पकड़ के जा रहा होता है. उसका पैर कहीं और, हाथ कहीं, पता नहीं वो कहीं और कर रहा होता है. बहुत बार होता है शोल्डर डिस्प्लेजियन, हिप डिस्प्लेजियन, ये ऐसे हो गया. वो कौन करता है सारा? पिताजी. उसको पता नहीं, डेलिकेट हैंडल नहीं कर सकता. इट्स very, we can say, durameter type of father. It's not pyometer type of mother. So pyometer is like a delicate mother or soft mother which is caring so delicately to the delicate structure in our body, that is brain. Brain का delicately care कौन कर सकता है? Pyometer, and that's why it is very near to the brain. So pyometer is the structure which is very delicate structure and caring or giving softly care to the brain. So इसके बारे में points लिखे हुए हैं, उसको पहले इसमें क्या लिखा है वो देख लो, फिर आगे पढ़ेंगे हम pyometer. The brain and the spinal cord are completely surrounded by three layers, which is known as meninges. Meninges lying between the skull and the brain, and between the vertebra foramen and the spinal cord, and these are pyometer, arachnoid meter, and durameter. So these are the three membrane: pyometer, arachnoid meter, and durameter. देखिए, pyometer, arachnoid meter, and durameter. Remember the sequence. If somebody asks you from in to out, pyometer, arachnoid meter, and durameter, and somebody asks you from out to inner, then durameter, arachnoid meter, and
pyometer. Arachnoid meter is always in the center. कहीं भी डाउट लगे तो उसके बारे में पूछना है. So don't worry, it is really very simple and easy system. This is the picture जो हमने ऑलरेडी बना दी है, नहीं बनाना आपको ऐसा. This is the picture जो हमने ऑलरेडी बना दी है, नहीं बनाना आपको ऐसा. बना लिया और लिख लिया, दिखाया. This is the outermost membrane, bone. Bone के नीचे कौन सा membrane? Periosteum. और ये अंदर bone के अंदर जो होता है वो अपने को नहीं जाना है. Periosteal, यहाँ ड्यूरामीटर दिया हुआ है. Periosteal dura and meningeal dura, then arachnoid meter, then pyometer, और ये arachnoid villi तो आगे पढ़ाऊंगा मैं. This is the space, दिख रहा है. This is known as, यहाँ दिखा नहीं है, superior sagittal sinus, या इसको हम क्या बोलते हैं? Dural venous sinus, both are the same. आगे पढ़ाऊंगा मैं इनके बारे में. First membrane is pyometer. First point is it is a very soft and delicate membrane. That's why it is known as soft mother. So also known as soft mother. It is a delicate layer of connective tissue. Many blood vessels are there, containing many blood vessels, and it is also known as soft mother or delicate mother. Delicate mother. Soft mother or delicate mother. It covers the actual surface of brain and spinal cord. बना के दिखाया था मैंने पूरा. It is the membrane, only the membrane which covering the actual surface of brain and spinal cord. That is pyometer only. It is the only membrane which covers the actual surface of brain and spinal cord. Next, at the end of the spinal cord, the pyometer continue as a phylum terminate. बनाया था अभी. It's an extension of a pyometer. It last reach to the coccyx part. So this is about the pyometer. Phylum terminate length is approximately nearby 20 centimeter. याद हो गया pyometer? Second membrane is meter. As like this durameter, the next membrane which is the durameter. नहीं लिखा? Arachnoid is arachnoid meter. Next is the arachnoid membrane or arachnoid meter. Spider. Arachnoid means spider. Meter means membrane. Spider होता है? Spider main. वो स्पाइडर मैन का ड्रेस देगा, रेड कलर में ऐसे वो बने रहते हैं. वो इधर से ये करता है, उधर ये चपक जाता है चारों तरफ. या फिर नेटवर्क होता है, स्पाइडर का जाला दिखा ऐसे चारों तरफ बना हुआ. So if you look the subarachnoid space, it will also look like a network of spider. When we are seeing in a microscope, in between pyometer and arachnoid meter, we already discussed that there is a fiber which is known as denticulate fiber which connecting pyometer to arachnoid meter. बनाया था अभी. Because of the presence of this fiber, the subarachnoid space or this membrane will look like a spider network, and that's why it is known as spider meter or arachnoid meter. तो अदर वर्ड में पूछे इसका नाम तो क्या होगा? स्पाइडर मेटर और स्पाइडर मदर. याद रहेगा? Fibrous tissue layers between the durameter and pyometer. Arachnoid meter कहाँ situate होती है? तो answer should be in between durameter and pyometer. There is a fibrous membrane which is known as arachnoid meter. ये लो. The next one is space. In between pyometer and arachnoid meter, there is a space which is known as subarachnoid space, and there is a space between durameter and arachnoid meter which is known as subdural space. So first space is space between arachnoid and durameter is called subdural space, and the space between arachnoid and pyometer is known as subarachnoid space which contain CS. Now one interesting thing about this membrane or this membrane is, as we know that normally arachnoid meter and pyometers are not attached to each other directly. दोनों एक दूसरे से अटैच नहीं होती है directly, but a fiber which helping you to connect these two membranes, that is denticulate fiber. So denticulate fiber providing a connection between arachnoid meter and pyometer, and because of the presence of this fiber, denticulate fiber, the arachnoid meter and pyometer look like a single membrane. दोनों एक दूसरे से अटैच रहती है, तो दोनों क्या दिखती है? Single membrane दिखती है. So simple question is the combine, or we can say connectively, arachnoid meter and pyometer is also known as leptomeninges. So अगला इसमें लिखा है क्या? नहीं लिखा? लिखा नहीं है? नहीं लिखा. ये तो लास्ट लिखा, लिख लो आप ये तो. Cover the brain and spinal cord and ends at the end with merging with the durameter at the level of कहाँ तक होती है arachnoid meter? S2 बताया था मैंने अभी. So sacral 2 तक आपकी लास्ट रहेगी. इसके बाद लिखते हैं
What is the leptomeninges? So what is the leptomeninges? Your answer should be collectively pyometer and arachnoid meter are known as leptomeninges. They are connected by denticulate fiber, इसलिए सिंगल मेम्ब्रेन दिखती है और इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे? लेप्टोमेनिंजेस. तो ये लिख लिया? ये लिख लिया तो मैं लिख देता हूं. Leptomeninges, combination of arachnoid meter and the pyometer are known as leptomeninges. This is clear? मूव करें? arachnoid meter clear? Leptomeninges पॉइंट पर लिख लें आप. ये हटा दें? What is leptomeninges? Answer should be pyometer और arachnoid meter. Combinedly known as leptomeninges. ये combine कौन करवाता है? प्लस कौन करता है? Denticulate fiber. So here we have the picture. This yellow color में जो बना है पूरा. So this purple and green membrane together known as leptomeninges. So this is the leptomeninges. Last membrane which is durameter. Last membrane is durameter. Leptomeninges. So this is the leptomeninges. Last membrane which is durameter. Last membrane is durameter. Durameter which is present outer side of the brain or most outside of the brain. And जब कोई सबसे बाहर होता है तो वो सबसे क्या रहेगा? The most outer. और रजनी क्या लिख रही है? बिल्कुल. We have one student only which is continuously commenting and continuously present with us. That is Rajni. और रजनी क्या लिख रही है? ऐसा लग रहा है किसी कॉम्प्लेक्स चीज को हमारे साथ कंटिन्यूसली बने हुए हैं. आप लोगों से तो मैं बातचीत कर नहीं, आप तो पूछ लेते हो, कैसे पूछें? टफ मेम्ब्रेन. सबसे स्ट्रॉन्ग मेटर की बात करें, मेम्ब्रेन की बात करें, वो कौन सी है? ड्यूरामीटर. ये सबसे बाहर होती है, ब्रेन को प्रोटेक्शन आउटसाइड से दे रही है, टफ मेम्ब्रेन है. और इस ड्यूरामीटर की बात करें तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज टफ मदर. एक होती है पाया, जो छोटा बच्चा होता है, न्यू बॉर्न बेबी, उनकी मदर होती है दैट इज वेरी सॉफ्ट एंड डेलिकेट मदर. एंड व्हेन यू आर ग्रोन अप एंड यू आर इन योर टीनेज और यू आर इन स्कूल एज और व्हेन यू आर इन बड़े हो गए, आफ्टर दैट योर सॉफ्ट मदर विल बी कन्वर्टेड टू अ वेरी टफ मदर एंड द मदर विल हैव अ स्टिक. पहले वो आपको बहुत ऐसे रख रही थी डेलिकेटली, नाउ स्टिक आ रही है पास में आप. सो डेलिकेट मदर नाउ कन्वर्टेड इनटू द टफ मदर. सो टफ मदर प्रोटेक्ट कर रही है आपको. ड्यूरामीटर इज अ टफ मदर. सेरिब्रल, और पहले ये लिख दो यहाँ पे इसका मीनिंग, अदर आल्सो नोन एज. ड्यूरा का मीनिंग क्या है? टफ. ड्यूरा आपने पढ़ा, और ड्यूरेबल होता है. जब आप कोई मटेरियल लेने जाते हैं तो बोलते हैं इट्स अ वेरी ड्यूरेबल. नहीं देखा? कुछ भी स्लीपर्स लेते जाते हैं या कुछ ऐसा मटेरियल होता है जो टूटता नहीं है, लॉन्ग टाइम तक चलता है, दैट इज ड्यूरेबल. इट्स अ लॉन्ग ड्यूरेबल मटेरियल. ड्यूरेबल मतलब वो टफ है, मजबूत है, स्ट्रांग है, दैट्स व्हाई इट इज ड्यूरेबल, लंबे टाइम तक चलने वाला. तो इट्स अ ड्यूरामीटर व्हिच इज आल्सो ड्यूरेबल. टफ मदर, सो आल्सो नोन एज टफ मदर. नेक्स्ट टफ मदर तो आप लिख लो ऐसे ही, आगे इधर आ जाओ. Cerebral dura. Cerebral dura means which present around the brain. Cerebral dura matter is consists of two layer dense fibrous tissue. Spinal dura has only one layer. And everyone know that the name of these two dura matter in the brain. जानते सभी? Periostal dura matter and meningeal dura matter. So in cerebral में कौन सी होती है? देखो यहाँ लिखा हुआ है. अरे क्या चल नहीं रहा, मेरा अंगुली दर्द करने लगी है. Dura layers are the periostal dura and meningeal dura. ये कौन सी? Cerebral dura. यहाँ लिख दो cerebral dura. Cerebral dura layer are periostal dura and meningeal dura. Which membrane present toward the brain side? Meningeal. Which present toward the bone side? Periostal. Dural layers around the brain fuse together except where the separate to enclose the dural venous sinus. सारी जगह क्या होती है? चिपकी हुई रहती है. एक ही पार्ट जहां पे क्या होती है? सेपरेट होती है. और क्या बनाती है? dural venous sinus which is responsible for whole venous drainage of your brain. ब्रेन का पूरा venous drainage कौन करता है? ये dural venous sinus. And the next one is venous, और यहाँ लिखा भी हुआ है, venous blood drains into venous sinuses. And the last part, which is also very important, the tree extension of durameter: falx cerebelli, and tentorium cerebelli. So आप लिख लेते तीनों, फिर मैं बताता हूँ what is falx cerebelli, what is falx cerebelli, and what is. You understand everything very well? Yes. घर जाके बस 5 मिनट पढ़ना है, सब कुछ क्लियर हो जाए. टेंटोरियम सेरेबेलाई क्या होता है देखते हैं. So three extension of cerebelli. What is these three? We'll discuss. The word falx means it's sickle shape. Falx means sickle shape or crescent shape. Falx means होता है sickle shape. It is like this.
It's a fork shape or sickle shape. So the first falx cerebri, it's a membrane of dura mater which separating two structure or two part of the brain, the right and left cerebrum. This is the right lobe of cerebrum, this is the left lobe of cerebrum, and it is separated by a thin fold of dura mater continuously till the last part. ऐसे separate करेगा from starting here to the last here, separation. So अंदर की तरफ आप देखोगे तो ये ऐसे होगा और बीच में एक लाइन बनेगा और ये होता है इसे तेरे नाम, और तेरे नाम जो बाहर दिखता है वैसे अंदर भी होता है, वो अंदर वाला तेरे नाम क्या होता है? फाक्स सेरेब्राई. सो व्हाट इज फाक्स, समझ गए तेरे नाम क्या है? वो मांग, इंडियन टिपिकल वुमेन्स हैविंग a specific मांग आफ्टर मैरिज, that is known as फाक्स cerebri inside अगर है तो. आजकल नहीं होना चाहिए, it is not necessary and I'm completely against it, but हम बात कर रहे हैं फाक्स cerebri. So what is फाक्स cerebri? The thin fold of dura mater with separating two lobe of cerebrum, that is known as फाक्स cerebri. It is like यहाँ से लेके यहाँ लास्ट तक रहेगा, और जो हमने यहाँ बनाया था इसमें आप देख सकते हैं, it will be here in frontal view. This ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, सब में ऐसे बनाया हुआ है. ये जो बन रहा है लास्ट तक ये कंटिन्यूस रहेगा आगे से पीछे तक ऐसे. This is known as फाक्स cerebri. तो फाक्स cerebri between two lobe of cerebrum, present between two lobe of cerebrum. Falx cerebelli, एक है cerebri और एक है cerebelli. Cerebelli is related to cerebellum, which is present on the posterior part of this brain. So यहाँ पे cerebellum होगा, ये cerebellum, cerebellum is also separated by in two lobe, right and left. So again, the membrane which is separating cerebellum into two part, that is known as falx cerebelli. So इसमें तो possible नहीं दिखाना, वो पीछे की तरफ है posterior part में. The third one, which is नहीं, this is the, अब तो मैं इसको खराब कर ही सकता हूँ. This is the cerebellum and this is the cerebrum. The thin fold of dura mater, which separating these two organs, cerebrum and cerebellum. ऊपर की तरफ cerebrum, नीचे की तरफ cerebellum, दोनों को क्या कर रहा है? सेपरेट करने के लिए जो मेम्ब्रेन का फोल्ड है, that fold is known as tentorium cerebelli. So first falx cerebri, first one, this is falx cerebri between two lobe of cerebrum. आप नीचे लिख लेंगे अलग से cerebrum, and this falx cerebelli between two lobe of cerebellum. और ये एक्सटेंशन कौन सी मेम्ब्रेन के है? ड्यूरा मेटर के. टेंटोरियम सेरेबेलाई बिटवीन सेरेब्रम एंड सेरेबेलम. सेरेब्रम और सेरेबेलम को सेपरेट करने वाला फोल्ड, दैट फोल्ड इज नोन एज टेंटोरियम सेरेबेलम. द फोल्ड ऑफ ड्यूरा मेटर विद सेपरेटिंग द सेरेब्रम एंड सेरेबेलम, दैट फोल्ड इज नोन एज टेंटोरियम सेरेबेलम. याद हो गया? ड्यूरा मेटर याद हो गया? पायामेटर, अरेक्नोइड मेटर एंड ड्यूरा मेटर, these are the three protective membrane of our brain. Next we have a very important topic, that is the ventricles of brain, that we will discuss in next class tomorrow. Thank you.